अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने किंगडम एनिमेलिया के 35 MCQs डिस्कस किए थे। आज हम 35 से ऑनवर्ड देखेंगे। पहला है हमारे पास 36 रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नीमाटोड इज दे मे काज डिजीज टू ह्यूमन, दे मे काज डिजीज टू प्लांट, आल्सो कॉल्ड एज राउंडवर्म और हैव ए सिलोम। तो नीमाटोड्स जिसको हम एस्केलमंथीस भी कहते हैं और सीडोसिलोमेट्स हैव फॉल्स बॉडी कैविटी वाइल सिलोम इज ट्रू बॉडी कैविटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? अबाउट नीमाटोड के मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है हैव ए सिलोम। इसमें ट्रू सिलोम नहीं होती, इसमें फॉल्स सिलोम होती है। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट हुक वर्म इज, हुक वर्म के मतलब जो गलत स्टेटमेंट है, इट लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, सक्स द बॉडी फ्लूइड, फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप, होल्ड विलाई। तो हुक वर्म इज ऑलवेज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है हुक वर्म के मतलब। हुक वर्म इज ऑलवेज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कैन नेवर बी फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। नेचुरल सिल्क इज नॉट ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड्स obtained from an insect or glycolipids in nature। तो जो नेचुरल सिल्क है इस फाइब्रस प्रोटीन होता है प्रोड्यूस्ड बाय लार्वी ऑफ सिल्क वर्म, इट इज नॉट ए ग्लाइकोलाइपिड इन नेचर। नेक्स्ट है स्कैवेंजर इंसेक्ट्स में ईट डेड मैटर प्रेजेंट ऑन ऑर्गेनिजम्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, डेड प्लांट्स मैटर ओनली, लिविंग एनिमल्स ओनली। Scavengers are those animals that feed on dead animals and plants like Drosophila and vultures। तो scavengers feed on dead animals and plants। And acoelomate is liver fluke, starfish, pinworm या earthworm। तो acoelomate यहाँ पे liver fluke है, liver fluke is flatworm, platyhelminthes, all the platyhelminthes are acoelomate। The exact answer is liver fluke। Indeterminate cleavage is not a characteristics of Echinodermata, Mollusca, Chordata या Hemichordata। Mollusca are proterostome and have determinate cleavage in which fate of blastomere is foretold। Indeterminate cleavage is characteristics of deuterostome। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है? Mollusca। Indeterminate cleavage is not characteristics of Mollusca। Echinodermata, Chordata and Hemichordata have indeterminate cleavage, it is not a characteristics of mollusca। A body cavity is absent in acoelomate, pseudocoelomate, acoelomate and pseudocoelomate या coelomate। तो जो body cavity है acoelomates are those animal in which there is no body cavity or space between body wall and digestive system। This group includes only one phylum, Platyhelminthes, and Platyhelminthes are acoelomate। Body cavity is absent in acoelomate। Next MCQ है fate of the blastomere is foretold in Echinoderms, Hemichordata, Arthropoda या Chordates। Arthropods are proterostomes in which cleavage is determinate। Fate of blastomere is foretold and spiral। तो यहाँ पे Echinoderms, Hemichordates और जो Chordates हैं उनमें जो फेट है ब्लास्टोमेर की वो foretold नहीं होती। A fluid filled cavity which is mesodermal in origin but absent in nematode is coelom, pseudocoelom, gastrocele या spongiocele। तो coelom जो है is true body cavity which is always formed from mesoderm। nematodes are pseudocoelom। nematodes क्या होते हैं? ये pseudocoelom होते हैं। तो fluid filled cavity which is mesodermal in origin but absent in nematode is coelom। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? coelom। In coelomate gut is lined externally by visceral mesoderm, parietal mesoderm, splenic mesoderm या endoderm। तो during embryonic development mesoderm split into outer parietal layer that internally lines the body wall and inner visceral layer mesoderm that externally surround the gut। So the exact answer is visceral mesoderm। Which system is more developed in acoelomate? Excretory system, respiratory system, digestive system or osmoregulatory system। acoelomate has sac type digestive system, no respiratory and osmoregulatory systems।
एसिलोमेट है सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। दे हैव ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया हैविंग फ्लेम सेल्स। तो जितने भी एसिलोमेट हैं उसमें मोर डेवलप होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। Bilaterally symmetrical animals are lesser developed, lacking mesoderm, placed in one phylum only, triploblastic। तो जितने भी bilateral symmetrical animals होते हैं वो होते हैं triploblastic। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। Enterobius vermiculus is usually not associated with inflammation of appendix, inflammation of colon, itching of anus or blood clotting। Enterobius vermiculus movement cause intense जो है itching of anus, inflammation of mucous membrane of colon and appendix, resulting in insomnia and loss of appetite. It has no role in blood clotting. It has no role in blood clotting. Pick out different considering habitat. Habitat के लिहाज से different कौन सा है? liver fluke, hookworm, pinworm या ascaris। तो pinworm, hookworm and ascaris are parasite of gut, while liver fluke is parasite of bile duct of liver। तो इनमें habitat के लिहाज से different कौन है? liver fluke। Common housefly may be a cause of polio, tuberculosis, hepatitis or malaria। Hepatitis A and E is transmitted through contact with feces of affected person। Housefly feeds on waste material, therefore it may transmit hepatitis virus। So the exact answer is hepatitis। Next है liver fluke is fasciola hepatica, fasciola indica, schistosoma, mansoni या tinea solium। liver fluke is fasciola hepatica। fasciola hepatica lives in dash of its host bile duct, intestine, liver या spleen। liver flukes are parasitic worms that live in the bile duct of an infected organism। So the exact answer is bile duct। Digestive system in tapeworm is reduced, poorly developed, absent या highly developed। तो tapeworm absorb nutrients directly across their skin। So the digestive system in tapeworm is absent। Which of the following is called blood fluke? Tinea solium, fasciola hepatica, schistosoma और tapeworm। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी? शाइस्टोसोमा। शाइस्टोसोमा इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया इज ह्यूमन, पिग, शीप और स्नेल। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया इज पिग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? हुकवर्म, लीवर फ्लूक, पिनवर्म या प्लेनेरिया। द एग्जैक्ट आंसर इज हुकवर्म। हुकवर्म इज द पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हुकवर्म इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। pinworms are small parasite that can live in the colon and rectum. Liver fluke live in the blood, while planaria is free living organism। Next है which of the following parasite produce anticoagulant in human body? Encyclostoma duodenale, Enterobius vermiculus, Ascaris lumbricoides और Schistosoma। The exact answer is Encyclostoma duodenale। Dash move from country to country and damage the crop and plant? Flies, locusts, lice या bugs? Exact answer is locust। Dash the space between the ectoderm and endoderm is filled by a parenchyma cell in acylometa, coelometa, pseudocoelometa या radiata? तो exact answer is acylometa। Gut originate in acylomate from ectoderm, endoderm, mesoderm या mesoglea? The exact answer is endoderm। Exact answer is endoderm। Triploblastic organisms only have 3 embryonic tissue layers: endoderm, ectoderm and mesoderm।
Endoderm give rise to the lining of the digestive tract. First time excretory system appeared in fasciola. In proterostomia and deuterostomia, cleavage is indeterminate and spiral, spiral and radial, indeterminate and determinate and radial. The exact answer is spiral and radial. Which of the following worm is also termed as natural plough? Nares, earthworm, roundworm or hookworm? The exact answer is earthworm. Earthworm is also termed as natural plough. Because by their activity in the soil, earthworms offer many benefits: increased nutrient availability, better drainage and a more stable soil structure, all of which help improve farm productivity. The respiratory pigment in mollusk is hemoglobin, हेमोसायनिन, एरिथ्रोनिन या हीमो जो है एरिथ्रिन. द एग्जैक्ट आंसर इज हेमोसायनिन. एग्जैक्ट आंसर इज हेमोसायनिन. वुडन पार्ट्स ऑफ शिप्स आर डैमेज्ड बाय टेरिडो, हुकवर्म्स, नेरीज या इंटेरोबाइस वर्मिकुलस. द एग्जैक्ट आंसर इज टेरिडो. टेरिडो is a worm-like marine bivalve mollusk with reduced shells which it uses to drill into woods. Copulation in taenia occurs between two taenia, male and female taenia, two proglottids of different species. The exact answer is two proglottids. Each segment in the strobila of tapeworm containing a complete sexually mature reproductive system. So the exact answer is two जो है proglottids. Food of Ascaris in intestine of human host is blood, sugar, chyle और epithelium cells जो है. The exact answer is chyle. Chyle क्या है? A milky fluid containing fat droplets which drains from the lacteals of the small intestine into the lymphatic system during digestion. So the exact answer is chyle. Enterobius infections occurs through piercing, mosquito bite, inoculation, contamination. Pinworm infection usually occurs through ingestion of infectious eggs by direct anus to mouth transfer by fingers. Commonly occurs as a result of nail biting, poor hygienic or inadequate hand washing. So the exact answer is contamination. Which caste of bees visit flowers? Drones, queens, workers, both drones and workers. The exact answer is worker. The exact answer is worker. In honeybee caste system, workers are females. The worker bees have many jobs including cleaning, finding pollens, building new combs, taking care of baby bee. Rearing of silkworm is called sericulture, pasticulture, apiculture or agronomy. The exact answer is sericulture. Silk farming is the cultivation of silkworm to produce silk. The exact answer is sericulture. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद MCQs के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.